Hey guys, in this video I am going to give a review of the delicious food today my mom has made. I haven't made this food. This is something what I know how to cook and all this is, but this is something what my mom has made today. So yeah, मेरे को लगा यार मैं अपनी खाने का तो रिव्यू करता ही रहता हूँ, एक बार क्यों ना मम्मी जो बनाई है उसको भी रिव्यू करते हैं यार. सो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड पिठोरी, यू कैन सी ना. सो यहाँ पे यार इसको मैं जहाँ तक जानता हूँ इसको पिठोरी कहते हैं. यू कैन सी राइट. तुम्हारे स्टेट में इसे क्या कहते हैं? दाल और आटे से बना हुआ, आटे को शेप दे दिया गया है ना, लाइक लंबा चौड़ा जैसा भी तुम्हें. ये देखो ये लंबा शेप दे दिया है. शेप किसी तरह का तुम शेप दे सकते हो. शेप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. इट्स वेरी न्यूट्रिशियस बिकॉज दाल ही है और आटा ही है, तो आटा एंड दाल प्रोटीन इज़ अ गुड सोर्स, यू नो. सो instead of dal chawal you can cook this and enjoy a very delicious nutritional food. You can eat this with coriander chutney or tomato chutney or whatsoever the chutney you wish to eat, but right now I am going to eat with this red chili pickle. You can see right. So this is something what I am eating right now because I don't have coriander chutney and all. Today I felt why not to eat with this pickle, or mango pickle is also a good option instead of, but this is also very tasty. It's like, you know, thoda sa mirch, thoda sa tikha. I love to eat tikha, that's why I have taken this red chili pickle, right. So let me eat and let me know how actually how it has been cooked, right. अच्छी तरह से कुक हो गया है, अच्छी तरह से कुक हुआ हुआ है, कोई भी रॉ फ्लेवर नहीं आना और किचकिच सा नहीं कर रहा है ना, क्योंकि आटा है तो थोड़ा बोरा तो होगा ही. जैसे तुम देख सकते हो ना, इट्स लाइक प्रॉपरली कट हो जा रहा है. ये देखो कट हो जा रहा है ना, कट हो जा रहा है, तो प्रॉपरली कुक हो चुका है और इजी है यार, जल्दी बन जाता है. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टू कुक दिस, राइट. एक चीज़ है यार, जैसे यहाँ पे जैसे मैं तो पिठौरी बोलता हूँ ना, तुम लोग क्या बोलते हो एक बार कमेंट में लिखो. जो भी स्टेट से हो तुम, what exactly you call this food to, right? I would love to know. I would really love to know, so that I can also enhance my knowledge of, okay, in this state this is called this and that, right. So comment down below. I would really love to know what is called in your street. This is very nutritious and all. तो यार तुम क्या डेली लंच में दाल चावल से परेशान हो गए? लाइक यू डोंट हैव मच ऑप्शन. This is a very good option you have to experiment with. If you haven't like experienced it or haven't cooked it, you can go for it. यार एक अच्छा ऑप्शन है, तुम कुक कर सकते हो और खा सकते हो. सच्ची बात है, इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू, पल्स, दाल, वीट और जो आटा है, आटा में भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है. सो it's a win-win situation for me. There is no such thing in this that is something what is going to harm your body. Like this totally is, if any person is ill in your home, I don't want to be, लेकिन ऐसा कोई ill है तो उसको भी ये recommend किया जा सकता है, right. So यार जितने भी greasy oily चीज़ें होती है that is not good. Instead ये सब चीज़ें डाइजेस्टेबल भी होती है, बहुत ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छा होता है. तो
bite I'm going to take. After that I'm going to wind up this video. Well, I liked it, and this is something was very superb to eat. And I would like to know यार what's your view on this? कैसा तुम्हें लगा ये वीडियो यार? और कमेंट करके ये बताओ यार तुम्हारे स्टेट में से क्या कहते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, है ना। तो यार एक बार अब कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे स्टेट में इसे क्या कहते हैं। एक बार क्लोज लुक मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो बताओ यार तुम्हारे स्टेट में से क्या कहते हैं। और लेट मी नो ऑल्सो यार, लेट मी enhance my knowledge as well by knowing what is exactly called in different states, right? So this is me signing off from this video. Have a great day, take care of yourself, and don't forget to subscribe, share and like.